बच्चों, तो आज का जो वीडियो है, वो एक्चुअली थंबनेल गलत लगा दिया है, तो थोड़ा-सा थंबनेल को लेकर के इश्यू होगा, थंबनेल को ठीक करना होगा, तो इसके लिए सॉरी सबसे, थंबनेल गलत लग गया है जो, क्योंकि वर्क एनर्जी का नहीं चल रहा है, ये चल रहा है अभी रोटेशनल मैकेनिक्स, यानी पार्टिकल्स ऑफ सिस्टम या सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। सिस्टम के बारे में ऑलरेडी बता चुके थे, तो अब चलते हैं, बात करेंगे आज जो बात करेंगे मतलब 2 पार्टिकल सिस्टम हो चुका था ना, 2 पार्टिकल सिस्टम हो चुका था। आपका फिजिक्स का एग्जाम कब से है? 12th फरवरी का है। लाइव में सभी चैप्टर का रिवीजन जो है वो शुरू कर रहे हैं हम, वो 2 तारीख से शुरू कर रहे हैं, क्योंकि लाइव जो चलने वाला है वो 10 दिन 15 दिन का रहेगा लाइव मेरा, मैं बता दे रहा हूँ। और कोशिश ये किया जाएगा कि फुल रिवीजन हो, बढ़िया से रिवीजन हो और सारा क्वेश्चन को मैं करवा सकूँ। वो चैप्टर को वो चैप्टर को करवाऊँगा, जिससे कि क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है और निश्चित है कि वहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। तो वो करूँगा, वो करवाना है, मतलब इस तरह का लाइव जो है ना प्लस 2 को इस बार वाले को इस बार जो दे रहे हैं प्लस 2 उन बच्चों के लिए है कि मैं म आज सोमवार है, सोमवार से मंडे से नेक्स्ट मंडे अपकमिंग मंडे से मैं आ रहा हूँ शाम में 6 बजे से, याद रखिएगा 6 बजे से। 6 बजे से रहेगा या सुबह में हम 7 बजे से लेंगे क्लास। जो भी टाइमिंग हो आप टाइमिंग देख लीजिएगा, बता दीजिएगा उसके अकॉर्डिंग किया जाएगा। कोई ऐसा टाइमिंग बताइएगा। हुँ, हुँ। हाँ, बिल्कुल हो जाएगा। रिवीज़न जो क्लास है ना बिल्कुल हो जाएगा, 20 तारीख तक बहुत है। इसलिए कि अगर हम देखें तो इतना ज़्यादा चैप्टर लेंदी नहीं, हम लोग बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस टीचर हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग ओ, मनगढ़ंत हवाबाज़ी नहीं करने वाले हैं। आप देख लीजिए क्लास करके मेरा, आपको लगेगा कि नहीं हवाबाज़ी नहीं होगी, जो भी होगा वो रियलिटी होगा और ये कर लिया जाएगा। अगर थोड़ा-सा टाइमिंग बढ़ाना पड़ेगा, 1 घंटे का क्लास जो होता है वो 1 घंटे का नहीं क्लास बल्कि 2 घंटे का क्लास लेना होगा हमको। 1.5 घंटे से 2 घंटे का 1.5 घंटे के आस-पास का क्लास लेना होगा। तो आराम से कर लेंगे, बढ़िया से करेंगे, विश्वास कीजिए। लेकिन हाँ, आपका साथ चाहिए होगा, आपका साथ सिर्फ़ ये चाहिए होगा कि आप उधर से क्वेश्चन पूछें, कोई भी डाउट हो वो पूछें, तो अच्छा लगेगा, ठीक है? क्योंकि एक बात मान कर चलिए आप कि आप पहले ये बताइए कि आप सीबीएसई से हैं कि बिहार बोर्ड से हैं? 20 फरवरी से तो लग रहा है कि सीबीएसई का है, तो आई थिंक सो कि सीबीएसई के हैं। जब सीबीएसई के हैं तो आपको पता होगा क्वेश्चन का पैटर्न्स, मुझे बताने की तो ज़रूरत है नहीं। क्वेश्चन का पैटर्न्स, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड, दोनों आपको पता होगा, ठीक है? देखिए ना, तो अभी जो हम लोग देखने वाले हैं ना वो है एसएससी, क्या चीज़ का एसएससी का क्या है मतलब? क्या बोल रहे हैं? सीबीएसई, आईआईटी, एसएससी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, क्या समझे? मैं नहीं समझा। एसएससी का मतलब नहीं समझा कि एसएससी रोहन जी कोई है, वो पूछ रहे हैं एसएससी मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, एसएससी कहना क्या चाह रहे हैं आप? रोहन जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। एसएससी मतलब फुल फॉर्म बताना है मुझे, क्या करना है? ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। देखते हैं, ठीक है।
तो चलते हैं सीधे टॉपिक पे चलते हैं, टाइम नहीं बर्बाद करें। टाइम और डेटा दोनों कीमती है आज के डेट में, ठीक है? तो टाइम और डेटा दोनों बचाना है हम लोग को। आज के डेट में कहा जाता है कि डेटा, तो यहाँ तो हम लोग पढ़ने वाले हैं, 11th का क्लास का चल रहा है। क्या है टॉपिक आज का? सिस्टम ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सेंटर ऑफ मास ही नहीं है, हाँ, सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम ऑफ इन पार्टिकल्स, ठीक है? ये मेरा आज का टॉपिक, मतलब कि एक प्लेन में मेरे पास क्या है, तो बहुत सारा पार्टिकल है स्पेस में। ये है m1, m2, m3, m4, इस तरह से mn है, n नंबर ऑफ पार्टिकल है। ये मेरे पास एक्स एक्सिस मान लेते हैं, इसको वाई एक्सिस मान लेते हैं, इसको जेड एक्सिस मान लेते हैं, ठीक है? ये है मेरे पास n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, m1, m2, m3, m4, बहुत सारा है, ठीक है? तो मुझे तो ठीक लग रहा है, वो लग रहा है शाम में अगर हम लोग 5 बजे से आ जाएँ तो कैसा रहेगा? 5 बजे से आ जाएँ या 6 बजे से आ जाएँ? कौन-सा टाइमिंग ठीक रहेगा 12th के लिए? जो इस बार बोर्ड दे रहे हैं, उन लोगों के लिए अपना कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि बोर्ड के लिए, क्योंकि ये बात अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि हम लोगों को 1 घंटा से ज़्यादा टाइम देना होगा। 1 घंटा से ज़्यादा क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे, कुछ क्वेश्चन जो हमारे पास है, 6 बजे से, ठीक है? बढ़िया है टाइमिंग, 6 बजे से ही किया जाएगा, ठीक है? 6 बजे से लेकर साढ़े 7 तक कर लिया जाएगा, आ गया। सॉरी फॉर इंटरप्शन, स्टूडेंट्स। देयर वाज़ अ ग्लिच ऑफ क्या इंटरनेट, देयर इज़ अ ग्लिच ऑफ इंटरनेट, सो सॉरी एंड इग्नोर इट। नाउ come to the point. What we have a system, or you know very much about the system. What was the definition of system? The definition of system was any part of the world which is given you as a point of study is called system, you know. Now I have a system having n number of particles, m1, m2, m3, m4. There is, and their position from the point O is r1, r2, R3, R3, R4, Rn. Here is a system having n number of particles in which R1, R2, R3, R4 are so many number of particles, and there is number of particle is n. You have n number of particles in this system. Now we have to find the center of mass of the system. Where is its center of mass? Where is a point of that system where the total mass of system is concentrated? So total mass of the system is concentrated. Okay. So now we will start the calculation. As from the definition of center of mass
mass as from the definition of RCM be the positional vector of center of mass from origin O. This is your O point. This is Z axis. It was X axis. What is Y axis? You very much know about the what? This is your X axis, Y axis, Z axis, and all masses are lying in the space along, like in this way. X axis, like in this way. What I have, I want to, let's give up. तो यहाँ पे देख रहे हैं, तो पोजिशनल वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम ऑरिजिन इज ओ नाउ RCM equal to, it was the ratio of product of mass and positional vector of that mass and summation of all the masses with their positional vector to the total mass of the system gives center of position of center mass of the system. Now in that case, M1 R1, M2 R2, M3 R3, Mn Rn upon total mass of the system. It will be M1 plus M2 plus M3 up to Mn. Now this is your position of center of mass, positional vector of center of mass. Now what we have? We have M1 R1 plus M2 R2 Mn Rn upon M. Okay. What is the value of M? So value of M will be M1 plus M2 plus M3 Mn. M is equal to summation M I is equal to 1 to I is equal to N. Okay. Now RCM equal to M1 R1 M2 R2 Mn Rn. This is the position of center of mass. Now what we have? R1 refer. So you know very much na, if a point lies in the free space, lies in the space with the coordinate x, y, z, x, y, z, y axis, z axis, x axis. This is R. Now in that case, the positional vector of R is equal to xi plus yj plus zk. Basic from the coordinate geometry also you know about this vector in 3 dimension of vector addition in class 11th. So we will use this formula here. M1 R1 may be referred as x1 plus y1 plus z1 I j k.
Similarly, M2 X2Y plus Y2J plus Z2K. In this way, इसको मिटाते हैं यहां से. Now here this is your information about the center of mass. So Mn Mn equal to what we have? Xn I plus Yn J plus Zn K, and total mass of the system is M. Now RCM, center of mass, equal to 1 upon M. M is what? M is the total mass of the system. M refer the sum of the total mass of the system. Here is M. Now what we have? M2, M1, M2, M3, M4, M5. In that scale, we will write simple summation prefix suffix M I. I equal to 1 to I equal to N. Here is X1, X2, X3, X4, X5. So what we have? Xi, Xi, I cap plus Yi, J cap plus Zi, K cap. Okay. When we will put X1, so X M1, X1, Y1, Z1. When we will put I equal to 2, then M2, X2, Y2, Z2. When we will I value of I equal to 3, M3, X3, Y3, Z3, like in this way. Now, R center of mass equal to 1 upon, this is 2 M summation M I X I cap plus summation M I Y I J cap plus summation M I Z I K cap. K cap. Here we will multiply Mi from the all the brackets member elements. So bracket elements are Xii, Yij, Zik. Then this will be the expression after multiplication. Here is, now we know that RCM refer also coordinate na, also refer coordinate also refer coordinate RCM
we we know that RCM also refer. I have something wrong. What as we know that RCM also refer. We know the RCM also refer. यहाँ से we know that RCM also refer positional vector of the center of mass. Here we have RCM will be also the positional vector of the center of mass. Now in that case, its mass So in that case, its coordinate assumed as x cm I, y cm j plus z cm k. Now in that case, what we have, RCM equal to xcm. A small letter we will not use a small letter, because it will be just similar to the above expression. xcm I, y cm j, z cm k. Okay, this is, so in final expression, what now, RCM is equal to xcm I plus ycm j plus zcm k, or this is equal to also 1 upon m summation mi xi. It was just like in this way. Here is the expression mi xii mi yij. It was equal to the RCM. RCM is equal to this. This is also equal to the RCM. Here is clear. Now we will move to the next page. So here is next page. RCM is equal to xcmi, ycm, jcm k. This is equal to the mixi I plus mi yi j plus mi zi k, 1 से n तक गया। तो उस कंडीशन में देखो तो एक CMI ये लग रहा है इसको रिफर करता है, YCMI किसको रेफर करता है, इसको रेफर करता है, ZCMI किसको रेफर करता है, एक से रेफर करता है। ठीक, यहाँ से तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, hence from above expression xcm I बराबर mi xi I अपॉन कैपिटल M, क्योंकि कैपिटल M मल्टीप्लाई है सबसे, ये सब में जाएगा,
total mass of the system. M. What is M? M is the total mass of the system. Same way में YCM Z is equal to MI 1 to N 1 upon समेशन 1 से N तक MI YI J. We will eliminate J, यहाँ से कर देंगे. I is here is I, it will be cancelled, it will be cancelled. Now in that case the final result will be, now in that case ZCM equal to summation 1 upon M MI ZI I equal to 1 to N. This is the final equation. This is your final equation expression. Hence, what we have, if you have a system of n number of particles and you have to find the positional vector of the RCM, so we will find the what is the center, what will be the center of mass of the total particles that include in a system along x-axis, y-axis and z-axis, and then we will use simple vector addition, just like in this way. What was the simple? Here. Now we will use this formula, find the final result of center of mass. So I have some question on that topic. That topic. Oh.
हाँ, आवाज़ नहीं जा रही है, माइक ऑफ था। हाँ, मुझे मालूम नहीं था, माइक ऑफ था, सॉरी। आवाज़ नहीं जा रही होगी फिर, आवाज़ नहीं जा रही थी ना। हाँ, माइक ऑफ था, देख नहीं पाए। हाँ, मैं देख नहीं पाया, माइक ऑफ था। ठीक है, मैं हाँ, हाँ, माइक ऑफ था। चलिए कोई बात नहीं। मैं बोल ये रहा था कि आज मेरी जो है ना गला दर्द कर रहा है। आज के लिए सॉरी, इसलिए मैं बोल रहा था कि गला दर्द कर रहा है। फेयरवेल था, +2 वाले आज चले गए। आज उनकी विदाई हो गई। ऑफलाइन क्लास में जो बच्चे मेरे से पढ़ते हैं, उन लोगों की विदाई हो गई। तो वो लोग जा रहे थे, तो वही गाना बजाना हो गया थोड़ा, तो इस कारण से गला थोड़ा-सा बैठा हुआ है। लेकिन कल हम लोग आएँगे, कल यहाँ पे आएँगे और आगे सिलेबस को बढ़ाएँगे। इसमें कुछ क्वेश्चन भी करना था मुझे, तो आज नहीं हो पाएगा, थोड़ा सॉरी, कल किया जाएगा। और लाइक करके जाइएगा, प्लीज़ लाइक करके जाइएगा, अच्छा लगेगा मुझे। तो गुड नाइट।